हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 8 का सेमेस्टर 2 का जो असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले सोशल साइंस सब्जेक्ट क्वेश्चन 2B की। अगर इसमें बात करें, क्वेश्चन 1 है, 1B जो सारे ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन 2 है वो भी सारा ऑब्जेक्टिव है। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 2B से। तो गिव रीज़न है सारे क्वेश्चन 2B में। चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, द 19th century is also known as the century of the Renaissance in India. तो आंसर आएगा, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी सोशल एविल्स लाइक द चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, फीमेल इन्फेंटिसाइड, सेल्वरी, सती प्रथा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सी सारी चीज़ें क्या हो गई थी, प्रोहिबिटेड करवा की गई थी। अगेन विडो री मैरिज करवाना स्टार्ट किया था, मतलब वो टाइम पे ये क्या था, प्रोहिबिशन था। बट ये सब किसने स्टार्ट किया था, ये टाइम पे स्टार्ट आउट हुआ था 19th सेंचुरी में। इलिटरेसी, सुपरसेंसेंस वी आर प्रिवेलेंट इन इंडिया। The India of the 19th century is also known as the India of socio-religious movements. मतलब बहुत सारा सोशली और रिलीजियस चेंजेस हुआ था। बिकॉज सम ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्म की वजह से ये जो 19th सेंचुरी है उसको रिनेंसियंस बोला जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट। राजा राम मोहन राय इज कंसिडर्ड एज द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया। तो राजा राम मोहन राय started campaigning against the social evils like the sati system in India, both individually and through institutions. Raja Ram Mohan Rai established the आत्मीय सभा इन 1815 में स्टार्ट किया था। इसके अलावा ब्रह्मो समाज के ऑफ द फाइट अगेंस्ट द सोशल एविल्स लाइक सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, जैसे सबके सामने उन्होंने क्या किया था, फाइट किया था। Not allowing the widow remarry, lack of women's education. Thus Raja Ram Mohan Rai led to the foundation of the modern India. इसलिए उनको बहुत ही मतलब ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स बोला जाता है इंडिया का, राइट। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1, वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। तो उसका आंसर आएगा, रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस पास हुआ था कांग्रेस सेशन के अंदर लाहौर में इन 1929 को। इट वाज द चेयर्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू। और रिजोल्यूशन हुआ था, वाज पास टू सेलिब्रेटेड किया था, दिस डे इज द पूर्ण स्वराज। मतलब 26 जनवरी ही थी वो दिन को, तो उसी दिन को ये लोगों ने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बोला जाता है, 1915 को सेलिब्रेटेड किया, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन डिसाइडेड टू पार्टीशन इंडिया। तो व्हेन लॉर्ड माउंटबेटन was appointed the viceroy, communal riots were going on in many parts of the nations. Due to the non-cooperative attitude of the Muslim League, the interim गवर्नमेंट कुड नॉट फंक्शन, मतलब गवर्नमेंट ने कोई इंटरनेशनल फंक्शन पार्ट नहीं लिया था। एंड देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज रिगार्डिंग द स्वराज बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग्स। चैप्टर नंबर 8, पुलिस एक्शन हैड टू बी टेकन इन हैदराबाद। तो आंसर आएगा, व्हेन द निज़ाम ऑफ हैदराबाद डिसाइडेड टू स्टे इंडिपेंडेंट, द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड किया टू सेव द सिटीजन्स ऑफ हैदराबाद थ्रू पुलिस एक्शन एंड गिविंग एश्योरेंस टू प्रोटेक्ट द निज़ाम्स इंटरेस्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चंस। टुडे ऑल्सो 1/3 पार्ट ऑफ द कश्मीर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। तो उसका आंसर आएगा, पाकिस्तान इन्वेडेड कश्मीर टू एनेक्स इट। तब महाराजा हरि सिंह का रूल्स चल रहा था। महाराजा हरि सिंह डोगरा साउथ मिलिट्री हेल्प फ्रॉम द इंडिया एंड साइन किया अ पैक्ट विद द इंडिया टू मर्ज विथ इट। द इंडियन आर्मी इमीडिएटली वेंट टू कश्मीर एंड डिफेंडेड इट,
but the meantime Pakistan had illegally occupied the 1/3 part of the Kashmir. So that's why Pakistan still hold 1/3 part of the Kashmir is known as the POK, means Pakistan occupied Kashmir. Okay, right? Next, chapter number 17, question number 1. The High Court as a link. तो होगा ही हाई कोर्ट एक दूसरे कोर्ट के साथ लिंक होगा, क्योंकि बात करेंगे एट द सेंट्रल लेवल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दैट कंट्री एट द टॉप पे होता है, सेंट्रल लेवल. द हाई कोर्ट इज द मिडल में आता है जो स्टेट लेवल पे होता है, एंड डिस्ट्रिक्ट एंड द सब ऑर्डिनरी कोर्ट्स. The high courts hear appeal of the district courts and give their judgments, while the Supreme Court hears the appeals of the high courts and gives the judgments. So that's why एक दूसरे के साथ link है, right? Okay, next questions. The judiciary is the milestone of democracy. तो उसके आंसर की बात करेंगे. In Indian democracy, there is a provision for an independent and impartial judiciary to protect constitutions and the fundamental rights of citizens, as well as to bring constitutional resolutions for any conflict of power and jurisdictions between the union and the state or between the states. मतलब सेंट्रल से लेकर स्टेट तक या तो स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट के बीच में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है. The judiciary examines and interprets the constitutional consistency of any provisional of the law, and the judiciary ensures that constitutional limits are not violated by the legislature or executive. Okay, done. So that's यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है. वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.